Welcome back to our second part of normal and self-adjoint operators. In the previous lecture, we had a discussion of normal operators. Also, we discussed Shor's theorem. हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि कब एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जिसका हर एक वेक्टर आइगन वेक्टर हो और हमने ये भी देखा था कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस रियल है तो उस केस में नॉर्मलिटी इज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वी दैट कंटेन्स आइगन वेक्टर। तो वहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में टी का नॉर्मल होना विल गारंटी दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वी दैट कंसिस्ट आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। So we will have this discussion in this lecture. So let us start this lecture by a theorem, and this theorem is 6.16. Okay, it says let T be a linear operator on a finite dimensional, and let me specify this finite dimensional complex inner product space. Okay, that is V. So V is complex. Then T is normal if and only if there exists an orthonormal basis for V consisting of eigenvectors of T. Okay, and the proof is quite simple. It says कि हमें T को पहले normal suppose करना है, then we will show the existence of orthonormal basis. Then we will consider an orthonormal basis and then we'll try to prove that T is normal. Okay, so first we are working on that T is normal. This implies there exists an orthonormal basis for V consisting of eigen vectors of T. So we will try to prove this direction first. Okay, so let T be normal operator defined on V. अब हमें ऐसा एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का आइडेंटिफिकेशन करना है. Since T is a normal operator, then we can say then T splits. Okay, अगर T split हो रहा है then we can apply the Shor's theorem. So we can apply Shor's theorem that says कि अगर T split होता है तो उस केस में हमारे पास एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा जिसमें अगर हम T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, which says that there exists an orthonormal basis beta that is equals to V1, V2 and so on Vn for V such that
such that the matrix T in beta, and we are calling this as A, is an upper triangular matrix. ओके अब हम ये शो करेंगे कि इस बीटा बेसिस का हर एक वेक्टर एक आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये एक फाइनाइट बॉडी है सो वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट एवरी वेक्टर इज आइगन वेक्टर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इस तरीके का सारी जो एंट्रीज होंगी वो जितनी भी एंट्रीज है जो कि इस डायगोनल के नीचे की साइड है वो दैट विल बी ज़ीरो ओके सो लुक एट द फर्स्ट एंट्री our first entry will be will be suppose some entry then we have 0 0 and so on so अगर हम इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर देखें so this will represent the coordinate vector with respect to the t image of v1 so ये v1 का कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इन बीटा राइट ओके नाउ t of v को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे then we have some a11 of v1 plus 0 time v2 and so on. So basically we have this particular relation which shows that v1 is an eigenvector of t corresponding to some eigenvalue a11. Okay? तो अगर ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है सो वी आर श्योर कि जो भी फर्स्ट एंट्री आएगी 1 1 पर दैट विल बी एन आइगन वेक्टर ओके सो इस केस में v1 हमारा आइगन वेक्टर बन जाएगा ठीक है सो now we show that every vector in beta is an eigenvector of t okay so let since a is upper triangular matrix so we must have therefore we must have t of v1 is equals to let me write a1 1 v1 okay for some a11 in the field f okay and that implies that v1 is an eigen vector okay eigenvector of t now in the second part let's suppose कि k minus 1 तक के जितने भी वेक्टर है वो आइगन वेक्टर है फिर हम सब ये प्रूफ करेंगे कि k के -1 के बाद का जो भी वेक्टर दैट इज v के वो भी एक आइगन वेक्टर है नाउ suppose that the vectors v1 v2 and vk minus 1 are eigen vectors of t ठीक है now we are claiming that on basis of this supposition we are claiming that vk is an eigenvector of t then ठीक है अगर v1 आइगन वेक्टर है और अगर हम ये सपोज कर रहे हैं दैट k -1 तक के वेक्टर्स आइगन वेक्टर है देन नाउ वी आर प्रूविंग दैट vk is आइगन वेक्टर and k be any number from 2 to n plus 1 okay so that it will be justified okay now vk को हमने आइगन वेक्टर प्रूफ करना है so you can see consider any number that is strictly less than k okay now for this vector we are going to consider an eigenvector that is vj और अगर वो eigenvector है तो किसी ना किसी eigen value के corresponding होगा okay so consider j that is less than k then vj is
an eigenvector of t corresponding to eigenvalue lambda j. ओके, अब अगर ये lambda j की corresponding eigenvalue है, then we must have t of vj that is equals to lambda j vj, and that will implies that t star of vj that will be equals to lambda bar j vj. ओके, अगर vj एक आइगन वैल्यू है तो vj आइगन वैल्यू टी स्टार का भी होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लेमडा बार j. ठीक है, नाउ हमें इस vj का, क्योंकि ये एक ट्राइंगल, देखिए हमने अभी जस्ट सपोज किया था कि ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी वी एम का अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vm इतने वेक्टर्स को ही काम में लेंगे, vm1 vm2 एंड सो ऑन vmm. तो अगर हम m वेक्टर की टी इमेज का v1 v2 v3 इन सब में लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, then we will use the m till m vectors only so that we can have the upper triangular representation. Okay, so if we are talking about vj, linear combination of vj, then we will use the vectors till vj. Now since we need to identify कि क्या ये v के एक आइगन वेक्टर है, तो उस केस में we will try to show that this t of vk is equals to some let me write alpha time vk, ऐसा हमने शो करना है. ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें इस vk को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. तो व्हाट वी कैन से, सिंस a is upper triangular matrix, therefore we can write the t of vk as the linear combination of till vk elements. So you can write a1 k v1 plus a2 k v2 plus and so on plus a k minus 1 k v k minus 1 plus a k k vk. So till vk vectors will be used to write the t image of vk. Okay, now if these ak, a2k, ak minus 1k and all are the entries from the upper triangular part of the matrix. Now if you identify the ajk, this where j is less than k, so we are talking about this coefficient, this coefficient, this coefficient and all these coefficient before this akk. ठीक है, then this ajk can be written as, this is the entry of matrix, so you know this row will be decided, this j will be decided by the vector itself vj and the k will be decided by t of vk. ओके, ये हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी जहाँ पर दिस रो विल बी डिसाइडेड बाय द सेकेंड कंपोनेंट एंड द कॉलम विल बी डिसाइडेड बाय द टी इमेज ऑफ सम वेक्टर. ओके, now this t of vk can be written as this inner product using the adjoint concept. We can write this as vk comma t star of vj, right? Now we have already written this expression, so this will be equals to vk comma lambda j bar vj. Now lambda j in the second component, so you can write this as lambda j bar, then take the bar. Okay, vk comma vj, and that is equals to lambda j vk comma vj. नाउ v1 v2 vk ये सभी बीटा के पार्ट है और बीटा एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो जब भी हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है. सो दिस इज इक्वल्स टू लेमडा जे डॉट ज़ीरो. ये क्यों लिख पा रहे हैं, सिंस वी के एंड वी जे आर एलिमेंट ऑफ बीटा. ठीक है, और बीटा एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है.
So you have that aj k is equals to 0 for j इज लेस देन k। तो जब जब j की वैल्यू लेस देन k है तो उस केस में हमेशा ए जे के ज़ीरो आएगा। तो 1k भी ज़ीरो होगा, ए 2k भी ज़ीरो है, टिल ए के माइनस 1k ये सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो आएंगे। इसका मतलब वी विल रिमेन विद दिस कोफिशिएंट ओनली। ओके, सो यू कैन से थस t of vk is equal to a kk vk, and that implies that vk is an eigenvector of t corresponding to a kk। ठीक है, thus you can write hence each vector of beta is an eigenvector of t and hence the result। जहाँ पर हमने ये शो करना था कि t अगर नॉर्मल है तो उस केस में बीटा एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा जिसका हर एक वेक्टर आइगन वेक्टर है।